Namaskar दोस्तों, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist. And you're watching Dr. KK's Med Talks with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का इस साल का आखिरी एपिसोड है एंड ये 948वां एपिसोड है हमारा 948th एपिसोड है. Let's talk about today's theme. Now human beings हमारी जाति है होमो सेपियंस, वो वाली होमो की स्पीशीज जो इंटेलिजेंट है और जिसे पता है कि वो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है. We are tropical creatures, born to live in the heat in the tropical climates. And we have to actually work a little bit harder to survive in cold climates. अगर आप देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है ह्यूमन बीइंग्स की ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा है, जहाँ गर्मी ज़्यादा है. जो टेम्परेट क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, क्योंकि ठंड से बचने के लिए हमें बहुत सारे तरीके ईजाद करने पड़ते हैं. Our own body's ability to produce heat and to fight the cold is limited. The regulation of body heat depends upon multiple factors. बहुत सारे factors हैं जो heat और गर्मी या ठंड या cold के साथ लड़ने में हमें मदद करते हैं. And one of these aspects is the endocrine system, हमारे hormones. The main goal is to maintain a core temperature which should not go below a particular level. इसको thermostat बोलते हैं, ताकि हमारी कोशिकाएं, हमारी सेल्स काम कर सकें. हमारी मसल्स भी काम करती हैं. अवर मसल्स वर्क ओवर टाइम ड्यूरिंग विंटर. हम शिवर करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल ठिठुरते हैं ठंड में. दिस हेल्प्स अस मेंटेन हीट, बट इट्स नॉट इनफ. देयरफॉर वी नीड हार्मोन्स. वी नीड द एंडोक्राइन सिस्टम टू हेल्प अस फाइट कोल्ड. और हमारा जो एडिपोज टिश्यू है, हमारी चर्बी जो है, दैट ऑल्सो हेल्प्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज आर देयर, वाइट, येलो एंड ब्राउन. तो जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, जिसमें खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये हमें हमारी मदद करते हैं इन फाइटिंग द कोल्ड. और जो अंग्रेजी वर्ड है हाइमल, HIEMAL, इसका देखते हैं क्या मतलब होता है. बट फॉर दिस लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट. लेट्स सी आवर टॉपिक फर्स्ट एंड देन वी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट. हमारा आज का टॉपिक है हाइमल हार्मोन्स. और जैसे कि हमने कहा, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज फ्रॉम आवर गेस्ट. और ये एक हमारे गेस्ट हैं जो भारत के ऐसे इलाके से आते हैं, और पहले भी हमें ज्वाइन किया उन्होंने. ऐसे इलाके से आते हैं जहाँ पे गर्मी भी खूब है और ठंड भी खूब है. सो ही इज परफेक्टली प्लेस्ड टू टीच अस ऑल दीज थिंग्स. दूसरा, आपने देखा होगा पहले जब भी हमें ज्वाइन करते हैं केके मेड टॉक्स पे, तो जो ऊटपटांग हमारे टॉपिक्स होते हैं, द टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ देम ऑल, वो लेते हैं डॉक्टर अतुल ढींगरा. सो वार्म वेलकम सर. Thank you, sir. Thank you. Thank you. It's pleasure to be a part of KK Med Talk, and it's always fun to learn with you. आपके साथ सीखने में बहुत मजा आता है. जब भी आपके साथ आता हूँ, तो कुछ ना कुछ जरूर नया सीख के जाता हूँ. हम सारे एक दूसरे से सीखते हैं ना. वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. एंड आपकी जो आपकी क्या इसको बोले, प्रसिद्धि, योर रेपुटेशन इज दैट यू टेक अप द टफेस्ट टॉपिक्स इन द वर्ल्ड. तो बचपन में भी ऐसी था डॉक्टर अतुल क्या? सारे मुश्किल वाले काम, सारे मुश्किल टॉपिक्स, मुश्किल मैथ्स के सम, वो आपके खाते में आते थे क्या? हाँ, बड़े भाइयों का प्यार है. तो डॉक्टर अतुल is a consultant in endocrinology at the Gangaram Bansal Hospital in Sri Ganganagar, Rajasthan. He is also affiliated with Global Hospital in Batinda, and he earned his DM endocrinology from AIIMS New Delhi, जहाँ पे इनको बेस्ट DM स्टूडेंट इन एंडोक्रिनोलॉजी का प्राइज भी मिला सन 2015 में, द डॉक्टर MMS आहूजा बुक प्राइज. He continues to work in Sri Ganganagar, but he is known throughout the country and beyond. So when you go to any meeting in India, in Nepal, or in other countries, you will find that Dr. Atul is a very sought after teacher. So Dr. Atul, बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है आज. ठंड का मौसम है. स्वप्ना जैन जी वेलोर से आपको गुड इवनिंग कर रही हैं. बिमला कपूर मैडम कर रही हैं गुड इवनिंग. और वो पूछे हैं, पहले अंग्रेजी तो समझा दें, व्हाट डज हाइमल हार्मोन्स मीन? So, Hiemal hormones means the
hormones that helps us to get past through uh, winter season. So it is specific to winters that this word is used, Hiemal. And Hiemal hormones means the hormones that helps us to get past through this difficult season, especially in my part of the country. I believe it's really a difficult season to be in. When we were introducing you, and we welcome VR Sahab also. Good evening, VR. So we said that Sri Ganganagar, जहाँ पे आप रहते हैं, that has got the coldest of winters and the hottest of summers. Is that true, sir? Yeah, so in winters we are coldest among the plains. At night the temperature usually drops to -2, -3, and we usually compete with either Churu or Mount Abu in the lowest temperatures. And during summers also, it's we are among the highest temperatures in western part of the country. It's around 50s at some days. Uh, Thanks a lot, sir. And Dr. Siddharth Dhanger from Mathura has joined us. He's a dynamic diabetologist there. डॉक्टर साहब ये पूछते हैं कि जब हम वर्ड यूज करते हैं हाइमल, हाइमल मींस रिलेटेड टू विंटर and hymal hormones change. So one extreme example is in some animals like bears, जहाँ पे hibernation होती है. तो hibernation की हिंदी हुई शीत निद्रा या शीत निद्रा भी. आप शीत लहर में आप सो जाते हैं. तो that is extreme. Uh, what happens during hibernation, and why can't human beings hibernate? हम क्यों ना सो जाएं 2 महीने सर्दियों में? सो हाइबरनेशन जो है वो कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो इस प्रक्रिया को यूज करते हैं. सो उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनली मेलाटोनिन और जो लेप्टिन हार्मोन होते हैं, वो उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं जिस वजह से उनको भूख नहीं लगती है. बेसिकली जो लेप्टिन हार्मोन है वो इन एनिमल्स में लेप्टिन हार्मोन की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है ड्यूरिंग विंटर्स, जिस वजह से सेटाइटी काफ़ी अच्छी रहती है इनके अंदर, इनको भूख नहीं लगती है और इस वजह से ये लंबे समय तक सो पाते हैं. और दूसरा मेलाटोनिन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है इस समय पे, इसलिए ये लंबे समय तक सो पाते हैं. और आपने खुद ने भी देखा होगा कि सर्दियों में हमारा भी सुबह सुबह उठने का मन कम होता है. And probably this is one of the reasons melatonin has been. It is said that during the short days our melatonin hormone increases a bit. That's why we tend to sleep more. And there are also some other hormones like serotonin, which is also reduced in winters, and that's why it gives a depressive feeling that we all have. कि कुछ मन हो रहा है आज कुछ भी करने का. So all of these are hormonal changes during the winters that we see. So this explains many things that we experience in our day-to-day life. ये नहीं कि कोई हमारे आसपास बीमार है या हम बीमार हैं. But we welcome Mohammed Bilal Sahab, Anamika Nu Madam, and Dr. Vipin Mishra. Dr. Vipin Mishra is a civil surgeon in Kangra district in Himachal Pradesh. वहाँ पे भी ठंड होती है. तो एक होता है, हाँ, एक होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर. ये तो साइकाइट्री की बीमारी हुई, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर. बट अभी डॉक्टर अतुल ने बताया कि कभी-कभी हमारा मन नहीं लगता सर्दियों में, दिल नहीं करता कुछ करने का. दैट इज बिकॉज ऑफ सीजनल चेंज, लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट. और दूसरा डॉक्टर साहब ने बात की मेलाटोनिन की. तो डॉक्टर साहब ये तो हमने सोचा था ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, हमारे फिलॉसफी का हिस्सा है, तीसरी आंख. तो ये साइंस में भी तीसरी आंख होती है क्या? व्हाट इज इट एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी? So melatonin is one of the hormones that is secreted by hypothalamus, and it is responsible for our sleep wake cycle. जो external cues हैं, light के जो cues होते हैं, वो इस हार्मोन के secretions में help करते हैं. जैसे नाइट टाइम में थोड़ा सा हार्मोन ये बढ़ जाता है जब हम सोते हैं. तो इस जब ये एक रिदमिक पैटर्न में सिक्रेट होता है, तब हम सो पाते हैं और हम अपने डे को जो मॉर्निंग होती है तब हम उठ पाते हैं. तो हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको सेट करने में मेलाटोनिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है.
और हमारे जो बाकी हॉर्मोन्स हैं, जो हमारी जो जिससे हम पता चलाते हैं, वो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है कि डे है या नाइट है। और जो न्यूरो एंडोक्राइन कनेक्शन है, वो हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सुबह ज्यादा बड़े होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रात को ज्यादा सिक्रीट होते हैं। तो ये जो पूरी डायरनल रिदम है, ये हाइपोथैलेमस के थ्रू सेट होती है, और इसमें भी मेलाटोनिन का रोल होता है। तो इसीलिए इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द थर्ड आई, बिकॉज इट इज एक्चुअली कनेक्टिंग एवरीथिंग, the external cues to the internal body hormonal physiology it is connecting. And yes, it is very important in our day to day life. तो जो तीसरी आंख है, जब हम इसकी बात करते हैं फिलॉसफी में या रिलीजन में, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में इसका अपना रोल है। इट कीप्स अस अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, गलत, और हमारे आसपास क्या हो रहा है। मगर साइंस में भी थैलेमस के पीछे एक ग्रंथि है, पिनियल ग्लैंड, और वहीं से मेलाटोनिन निकलता है, और वो हमें और दिन और रात का बताता है, और हमारी मदद करता है कि हम अपनी दिनचर्या और रातचर्या, एंड एट द सेम टाइम अपनी ऋतुचर्या, सीजन, बिकॉज़ वी आर स्पीकिंग अबाउट सीजन टुडे, इसको हम मेंटेन करके रखें। So a quiz question for everyone is, hibernation is when an animal goes into deep sleep during winter. But overall, all said and done, इंडिया में विंटर इतनी भयंकर नहीं होती जितनी समर होती है। तो क्विज क्वेश्चन है, what is that biological phenomenon in which an animal goes into deep sleep or into a lazy mode during summer? तो इसको क्या बोलते हैं? And the hint is that it begins with A. A is for Dr. Atul as well. So we'll have this quiz question. Let's see the answers, and we welcome Karna Pramod madam. But sir, आगे चलते हैं। अब विंटर में जब हम हाइमल हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कोई हार्मोन्स हैं क्या जो विंटर में बढ़ते हैं या घटते हैं? विंटर की वजह से चेंजेस आते हैं या हमारी बीमारियों में चेंज आती हैं? सो लेट्स एक्सप्लेन दिस वन बाय वन। पहले ऐसी डिजीजेस के बारे में बात करते हैं जो सर्दियों में बढ़ती हैं, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। और उसके बाद ऐसी डिजीजेस की बात करते हैं जो सर्दियों में छुप जाती हैं, ढकी जाती हैं, दे आर मास्क्ड, एंड व्हाई वी शुड बी अवेयर इज ताकि हम उनका इलाज ना छोड़ें। सो सबसे पहले हम जैसे हार्मोन्स की बात करें, तो सर्दियों में अक्सर जैसे हम देखते हैं कि विटामिन डी लेवल्स हमारे कम हो जाते हैं, बिकॉज हमारा जिस टाइम पे सन को एक्सपोजर होना चाहिए, उस समय पे सन का एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी लेवल्स घटने लग जाते हैं। तो हमें विटामिन डी चाहे एक्सटर्नल सोर्सेस से लेना पड़े, या जैसे पहले के ज़माने में दादी अपने बच्चों को लेके धूप में बैठती थी और ऑयल मसाज करती थी। वो एक अच्छा तरीका था विटामिन डी लेवल्स को बढ़ाने का। बट विटामिन डी हम आजकल एक्सटर्नल सोर्सेस से भी आसानी से ले सकते हैं, तो विटामिन डी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जो हमारी बोन हेल्थ में हेल्प करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जनरली सर्दी में हमको बोनी पेन्स भी होना शुरू हो जाते हैं, मसल एक्स ज़्यादा होते हैं। उसमें विटामिन डी का इम्पोर्टेंट रोल है। उसके अलावा यदि हम हार्मोन्स की बात करें, यदि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें, सो कुछ पब्लिकेशंस हैं इसके ऊपर, जिसमें लोगों ने कॉर्टिसोल लेवल्स को देखा है, और उसमें ये पाया गया था कि जो हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स हैं सर्दियों में थोड़े से बढ़ जाते हैं। शायद वो एक रीज़न है कि हमें भूख ज़्यादा लगती है सर्दियों में, और जो हमारा स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स होता है सर्दियों में, वो भी बढ़ जाता I think we have lost sir, but a warm welcome to Dr. Shashi Khare and Dr. VK Goyal. ठंड का सीजन है, तो शायद हमारी जो बैंडविड्थ है इंटरनेट की, उसको शायद ठंड लग गई, एंड डॉक्टर अतुल ने पहले ही कहा था कि गंगानगर में ठंड भी खूब होती है। बट वील कंटिन्यू विद द डिस्कशन। डॉक्टर साहब वाज स्पीकिंग अबाउट विटामिन डी। सनलाइट एक्सपोजर कम होता है तो विटामिन डी का लेवल्स कम हो जाते हैं विंटर में। दिस हैज बीन प्रूवन अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन टेम्परेट क्लाइमेट्स बट आल्सो इन इंडिया।
तो चाहे स्टडी हो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, तिरुपति की, या हो नॉर्थ की, पंजाब या दिल्ली की, ये चीज दिखती है कि विंटर में हमारे विटामिन डी लेवल्स लो हो जाते हैं. Then he had begun speaking about cortisol. Now, cortisol and adrenaline, noradrenaline, ये जो हार्मोन्स हैं ये आते हैं एड्रिनल ग्लैंड से. Cortisol comes from the adrenal cortex, and adrenaline and noradrenaline they come from the adrenal medulla. They are the fighting hormones. ये स्ट्रेस के साथ लड़ाई करते हैं, हमें तैयार करते हैं किसी भी तरह की स्ट्रेस से लड़ने के लिए. तो ये भी विंटर में बढ़ते हैं, एंड स्टडीज शोज दैट दे पीक इन February. कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन ये लेट विंटर में पीक करते हैं, एंड हमारा रिस्पॉन्स भी बढ़ता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड बिकॉज एक्चुअली विंटर इज अ टाइम ऑफ स्ट्रेस फॉर अ वार्म ब्लडेड मैमल. जैसे वी आर वार्म ब्लडेड, वी आर नॉट कोल्ड ब्लडेड. और हार्मोन्स की बात करते हैं तो T3 जो थायराइड का हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन जो सेक्स स्टेरॉइड है मेल्स का, ईस्ट्राडियोल जो सेक्स स्टेरॉइड है विमेन का, और प्रोजेस्ट्रॉन भी, ये सब भी लेट विंटर में बढ़ते हैं. और तो और एक हार्मोन है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इससे लंबाई बढ़ती है. ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन, ये भी लेट विंटर या स्प्रिंग में बढ़ते हैं. So what we see is that all these effector hormones, the hormones which come from the thyroid gland, the adrenal gland, the ovaries, and the testes, and IGF-1 comes from the liver. These are called effector hormones, EFFECTOR. ये सब late winter या spring में बढ़ते हैं. So this is a time of anabolism. The body is getting prepared. मजेदार बात यह है कि ये जो इफेक्टर हार्मोन्स हैं ये सब इनकी जो सिक्रीशन है दैट इज मीडिएटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस. तो मजेदार बात यह है कि एक साइक्लिक हाइपोथेसिस है, साइक्लिक हिस्टोजेनिक हाइपोथेसिस. वो ये कहता है कि समर में पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बढ़ता है. सो द पिट्यूटरी ग्लैंड बिगिंस प्रेपिंग इटसेल्फ अप इन समर, ताकि उसके जो इफेक्टर ग्लैंड्स हैं, जो नीचे वाले ग्लैंड्स हैं एक्सिस में, वो लेट विंटर या स्प्रिंग में काम करना शुरू कर दें. सो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू विंटर. ये जो चेंजेस हैं वो चेंजेस समर में ही शुरू होते हैं, एंड वी एक्चुअली हैव अ वर्ड फॉर इट. जैसे सर्केडियन रिदम होता है, सर्केडियन, सर्काडियन. सर्केडियन रिदम मीन्स ऐसे रिदम हार्मोन के जो हर 24 घंटे में ऊपर नीचे हों. तो एक सर्क रिदम होता है, सर्क एनुअल रिदम, विच मीन्स वंस अ ईयर. तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में भी और इफेक्टर ग्लैंड्स में भी हमें दिखता है कि सर्क एनुअल रिदम होता है. डॉक्टर अतुल इज बैक विद अस. वेलकम बैक सर. थैंक यू सर. एक्चुअली मेरा वीडियो मेरे को इसलिए ऑफ करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम हो गई है, बैंडविड्थ कम हो गया. बड़ी प्यारी डीपी है सर. ये कहाँ की है ये व्हाइट हाउस के सामने. Yes, no, that is pigment. Okay, and Dr. Vipin Sharma points out that in winter there is more of stress eating. Greetings to you, Dr. Atul, from Dr. Khilinder Saxena. He is a gynecologist. Dr. Vipin points out that one way of getting sunlight and waking up early in the morning, fixing up your third eye, that is Surya Namaskar. And that's right. Thank you, sir. That's a very important. Yeah. Dr. Atul, you were speaking of vitamin D. We had continued the discussion regarding changes in other pituitary hormones. We said that the pituitary size increases in summer, and the effector glands, that is the glands that are lower down in the hypothalamo-pituitary glandular axis, they usually increase in late winter or spring. So they prepare us for anabolism. But coming back to vitamin D, Dr. V.K. Goyal asks, should we take vitamin D with milk? Or with the newer pharmaceutical preparations, it doesn't matter so much? So, if you are taking, say, capsules, or if you are taking sachets, we all know that it's a fat soluble vitamin which requires biliary secretion for its absorption. So it is preferable to take these with food like milk, or even if you're taking these after meals, then also the absorption increases. But there are newer solutions like nano solutions, in which the vitamin D has been bound into a nanoparticle, where food actually doesn't matter. You can take
these solution irrespective of your food intake. थैंक यू। सो आई थिंक दैट आंसर्स डॉक्टर गोयल्स क्वेश्चन वेरी वेल। जो ट्रेडिशनल या पुरानी फॉर्मुलेशंस हैं, जो जैसे पाउडर्स हैं, मान लो सैशे में आएंगे, दैट मस्ट बी टेकन विद मिल्क बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल। क्विज क्वेश्चन फॉर एवरीवन। पहले वाले का मैडम ने वेलोर से स्वप्ना मैडम ने जवाब दिया फ्रॉग्स फॉर एस्टिवेशन, सॉरी फ्रॉग्स फॉर द समर स्लीपिंग, एंड मुंह से जवाब निकल गया। द फिनोमेनन इज नोन एज एस्टिवेशन, AESTI वेशन। हाइबरनेशन ठंड में जानवर सो जाएगा, एस्टिवेशन गर्मियों में जानवर सो जाएगा। एस्टिवेशन इज समथिंग दैट आई कम क्लोज टू ड्यूरिंग द हॉट समर्स। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर अतुल? So yeah, I actually come close to both the phenomena. So during extreme summers, I do feel more sleepy, and especially during the peak day of around say 2 3 p.m. when it is extreme hot, actually you feel like dozing off. And in winters, it's really difficult to get earlier. हम्म, तो किसी को रोने का बहाना चाहिए और किसी को सोने का बहाना चाहिए। So that's normal. So for everyone who feels sleepy, whether it's summer or winter, ये normal है। एक और क्वेश्चन है, ये डॉक्टर सक्सेना साहब का है। एनी रिलेशनशिप ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड इनफर्टिलिटी? So there have been a lot of association studies where people have tried to look into the association of vitamin D and infertility, and they have found the associations. But there can be supplementation studies, and like we have supplemented that person with vitamin D, and we have tried to look into the results in form of improvement in infertility. There the results have been conflicting, so we do not have an absolute data to suggest that just by improving vitamin D we can improve fertility rates. But association studies, there are many, there are plenty of association studies. अलाउ मी टू कंटिन्यू द डिस्कशन। एक तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं लॉग्ड इन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हम बात कर रहे हैं हाइमल हार्मोन्स की या सीजनैलिटी की, इसका लैटिट्यूड के साथ बहुत लिंक है। यदि आप इक्वेटर के पास रहते हैं, इक्वेटर के नजदीक, तो हार्मोन्स के में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गर्मी सर्दी में, बिकॉज लाइक इट इज फेमसली सेड इन पौंडीचेरी फॉर एग्जांपल। हमारे टीचर हैं डॉक्टर ए के दास सर, तो प्रोफेसर साहब कहते हैं देयर आर 3 सीजंस इन पौंडीचेरी। Do you know them, Dr. Atul? Hot, hotter, and Hottest. hotter. तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट एज यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे सीजनैलिटी का बहुत फर्क पड़ता है हार्मोन्स पे, हार्मोनल हेल्थ पे। One of the ways in which this manifests from a women's health point of view, Dr. Saxena is a gynecologist, that is seasonal affective disorder, and that is more common in women, and it is thought to be due to low estrogen levels during winter. So एक तो ये manifestation है women's health में, we should be aware of that. Second manifestation is in terms of fecundity. अब fertility की definition अलग है, fecundity की अलग है, the people in women's health know, but यहाँ पे there are many social issues. अब कुछ countries की studies हैं जो कहती हैं कि fecundity increases in winter, कुछ एक हैं जो कहती हैं कि fecundity increases in summer. How we explain these differences, one is based upon the latitude, how far away that particular place was जहाँ study की गई from the equator, and second is social factors, शादियां कब हो रही हैं, courtship कब हो रही है, winter में माहौल कैसा है, सब घरों में अपने bedrooms में बंद रहते हैं कि नहीं, या summer में ज्यादा बाहर निकलते हैं. So these social factors, cultural factors have a major role to play as well. Let's go on with the topic. And sir, एक डॉक्टर अतुल, हाइमल हार्मोन्स में एक क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हमें गर्मी लगती है, बुखार वाली फीलिंग आती है, तो गर्मियों में वो सिम्टम बढ़ते हैं, एंड सर्दियों में दे माइट गेट मास्क्ड। ये हमारे जो थायराइड के पेशेंट्स आते हैं, जैसे जो हाइपर थायराइड पेशेंट्स हैं, हम रूटीनली अपनी ओपीडीज में देखते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग समर्स, वो हमारी ओपीडी के बाहर 5 मिनट भी वेट नहीं करना चाहते। दे कीप ऑन ओपनिंग आवर डोर्स, सर मेरा नंबर है, सर मेरा नंबर है।
But during summers, during winters, they are more comfortable. But they feel like they don't even have disease. The temperatures, they feel comfortable. Their symptoms are actually much lesser during winters, during summers. So the chances of missing hyperthyroidism are more during winters, and we need to uh, look into other signs as well as when we are uh, looking into a patient with thyroid illness. And opposite is true for actually for hypothyroidism. In hypothyroid patients are we are more likely to miss these patients during the summers because they don't feel that hot. They are more comfortable. Uh, Whereas during winters they feel very cold. They are uneasy, and they become more symptomatic. So thanks. So hymal hormones or the impact of the hymal season on hormones extends to people with disease also कि वो comfortable है या नहीं है. Uh, कई चीजें और भी हैं जब हम इंग्लिश में फ्रेज इस्तेमाल करते हैं हॉट फ्लैश विच इज इन विमेन तो इसका Hmm. सीजन के साथ लिंक है क्या डू I यू mean, फाइंड विमेन कंप्लेनिंग ऑफ हॉट फ्लैश इन विंटर एज वेल especially, yeah, menopausal women are more comfortable during winters, and we actually during summers we actually tell them to be in cold surroundings so that they have less hot flushes if it is disabling them. So we ask them to control the temperatures around them to be. So this is what we usually hear from our patients as also. So usually it is a 50-55-year-old female who is coming with the husband, and they both are fighting because at the same temperature the husband is feeling very cold and the wife is comfortable. It's very common in our OPDs. ये तो लड़ाई हुई ना बिटवीन टू स्पाउसेस और कई बार मरीज आपस में लड़ पड़ता है सो इन विंटर द पर्सन विद डायबिटीज विल कम एंड से कि द रेस्ट ऑफ माय बॉडी इज फीलिंग कोल्ड बट माय फीट आर फीलिंग हॉट तो ये कॉमन है डॉक्टर अतुल आपकी ओपीडी में या ये अगेन वेरी कॉमन है। मेरे को अपने पैर बाहर रख के सोने पड़ते हैं रजाई से, क्योंकि मेरे रजाई में रखते ही मेरे को बहुत ज्यादा जलन और गर्मी महसूस होती है। बहुत कॉमन है, यू आर राइट। This is a symptom of diabetic painful neuropathy. And I हम्म, guess the people who wrote the textbooks, they wrote them in English. तो इसलिए उनको रजाई का मतलब नहीं पता और हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ठंड का मतलब नहीं पता. So maybe it is not mentioned in the book, but it's something very common. या Another complication and वो अब ये मूवी का नाम भूल गया ये भी क्विज क्वेश्चन में ही बनेगा जो who's the third person in a triangle so when you have a Bollywood movie usually it's one gentleman one lady and another gentleman sometimes it might be one gentleman and two ladies so they make a triangle a triad and फिर मूवी आगे 3 घंटे की चलती है ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है इसमें जो तीसरा एंगल है वो होता है चूहे साहब का रैट का सो द रजाई द फीट and a rat. How often do you see rat bite, Dr. Atul, in your patients with diabetic neuropathy? So it is again in past 5 years probably I had at least, which I can distinctly remember, 7 or 8 patients with rat bite who have actually remembered that yes they have been bitten, and they have those who have shown me the wounds with rat bite. Again, common in our part of the country. तो हरियाणा में ज़्यादा कॉमन है परहैप्स आई वर्क इन एन एग्रीकल्चरल बेल्ट बट डॉक्टर अतुल भी एग्रीकल्चरल बेल्ट में ही है एक चूहों का मंदिर है बीकानेर के पास तो मे बी राजस्थानी चूहास आर मोर वेल बिहेव्ड दैट माइट बी रीजन कि कम है यहाँ पे इट इज वंस अ मंथ सबसे बड़ी So, दिक्कत आती है दिस इज स्पीकिंग टू एवरीवन जब हम किसी को कहते हैं कि मे बी चूहे ने काटा है आपको अगर कोई रूरल बैकग्राउंड से कोई फार्मर है ही विल वेरी कैजुअली से यस सर थैंक यू सर एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बट सम पीपल फ्रॉम सम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स दे गेट वेरी अपसेट कि आपने ये डायग्नोज कैसे कर दिया जबकि डायग्नोसिस भी सही है दे विल बी वेरी हैप्पी कि डॉक्टर वेस्कुलाइटिस डायग्नोज करे 2500 टेस्ट करवाए जब हम कहते हैं कि रेड बाइट है सो दे टेक इट एज अ पर्सनल इंसल्ट एंड देन दे जस्ट गो एंड चेंज देयर डॉक्टर अब क्या करें
So I try to be very polite while telling the diagnosis to some people, but still it doesn't work. Your comments, Dr. Atul, on this? So yeah, I think you are absolutely आप बिल्कुल सही कह रहे हो इसमें it is difficult to tell to an educated who's I'll not say educated is the right word here, to a literate person. This is what I'll say, because education is if he had been educated, he would have actually understood what we are trying to tell him. Yes. So yes, it is common. They do get angry when we tell them that this may be red white. And now, yeah, I actually remember what you have been saying. One of my patients was actually he became furious. How can red white happen to me? But I distinctly remember telling him that yes, this seems to be red white. और मुझे एक बार याद है, मुझे लगा कि पेशेंट के साथ बुजुर्ग माताजी थी, तो हमने रेड बाइट डायग्नोस किया और पूरी स्टोरी सुना दी काउंसलिंग वाली, एंड आप ऐसे-ऐसे ख्याल रखें। एंड मुझे लगा मैं बेटे के साथ बात कर रहा हूँ, बेटा था साथ में, बट इट टर्न्ड आउट बी द ड्राइवर ऑफ द फैमिली। सो घर जाके खूब सोशल मज़ाक उड़ा मैडम का, जो बुजुर्ग माताजी थी हमारी, एंड देन द फैमिली केम बैक टू फाइट मी कि आई एम नॉट सेंसिटिव इनफ, और गलती मेरी थी। आई अज्यूम्ड दैट द मैन हू इज़ अकम्पनिंग हर इज़ हर सन, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ड्राइवर। तो मैडम लॉस्ट सोशल फेस, मतलब ये इश्यू आ गया था। We will come to more, yeah, questions. रेखा बिटारा मैडम हैज जॉइंड। गुड इवनिंग मैडम। और जिस पे हम आ रहे थे कि अभी तो हम बात कर रहे थे हाइमल हार्मोन्स एंड डिजीजेस, अब कॉम्प्लिकेशंस की बात। तो टू क्वेश्चंस रिवॉल्विंग अराउंड द सेम थिंग। डॉक्टर अतुल, करना प्रबोध मैडम कहती हैं कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट्स इन विंटर, यस और नो? And why is it that suddenly in our clinics and in our families, we are seeing a spike of accelerated hypertension? What So should we do? बीपी की दवाई बढ़ाएं, घटाएं, क्या करें? And Dr. Utsav Sahu is a diabetologist from North Delhi. He says BP tends to be high during winters. Is there any hormonal reason for it? What would be our preferred management? So yeah, definitely during winters we see that many of our patients actually require a hike up in their medications for hypertension, and there are some who are not on any medications. They now actually require medication. It is very much true in my OPD. During summers, the blood pressures stay around 110, 120 systolic and 70, 80 diastolic. We hardly find a patient who is hypertensive. We actually need to step down on the doses. But आज भी मेरी ओपीडी में मेरे को लगता नहीं, मेरे ख्याल से जो एवरेज ब्लड प्रेशर अगर मैं कहूँ तो 156, 150, 90 ये एवरेज रहा होगा. Topper was around 190 by 110, which I remember. So this is a routine in our OPD. Definitely there are some reasons that have been postulated for this. सबसे पहला reason जैसे मैं बता रहा था कि winters are a stress to the body, so stress hormones increases like cortisol, and there is further evidence that sympathetic hormones like adrenaline is also increased during winters, which is responsible for this increased blood pressure. सेकंड, हमें जो स्वेटिंग कम हो जाती है, हमारे को पसीना कम आने लगता है, उसकी वजह से सोडियम लॉस बहुत कम हो जाता है विंटर्स में हमारा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर्स हाई अप रहते हैं, और हमारा जो फूड भी हमारा मोर सॉल्टी हो जाता है विंटर्स में. जो हमारा खाना है ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिस वजह से भी हम सॉल्ट ज़्यादा रिटेन कर रहे होते हैं. सॉसेस और ये सब कुछ ज़्यादा हो जाता है, सॉसेस, पापड़, अचार, ये सारी चीज़ें विंटर्स में ज़्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से अगेन सॉल्ट इनटेक जाता है. सो ये रीजंस हैं हाई ब्लड प्रेशर के विंटर्स में. एंड डेफिनेटली हम एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा देखते हैं, और इसके साथ साथ हम जो इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे स्ट्रोक और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, ये भी ज़्यादा कॉमनली विंटर्स में देखते हैं. Thanks. So we also welcome Dr. Aditya KNV, who is a physician from Chennai. So thanks Aditya for joining. And in this KKM talk, we speak in Hindi and English both, but we ensure that all the relevant messages are given in both languages. So just to paraphrase what Dr. Atul has said, yes, what Dr. Utsav and what Karna madam said is right. BP does increase during winter. There is a latitudinal gradient. The further away you are from the equator, the more you will find this. And like Dr. Atul said in his OPD today, the average BP was 150 by 90.
150 by 96. That's true for my clinic as well. I'm maybe a few degrees, I'm situated a few degrees more north than Dr. Atul. The reasons are all endocrine actually. So the adrenal gland secretes more cortisol, more adrenaline and noradrenaline. This is in response to stress. The kidney also secretes more aldosterone. And uh, and Dr. Aditya, Dr. Utsav will be familiar. Usually, when we speak of endocrine axis, we have vertical axis: hypothalamus, pituitary, adrenal, hypothalamus, pituitary, gonadal. But we have some horizontal axis as well. One of them is the renoadrenal axis. Renoadrenal axis, you know by a different name, that is renin, angiotensin, aldosterone system. So the aldosterone and renin, they speak with each other actually. And when aldosterone goes up in the adrenal, it actually leads to an increase in renin angiotensin in the kidney as well. There is one more reason, Dr. Atul, which we spoke about earlier, and that is vitamin D deficiency. So it is also postulated that people with vitamin D deficiency have got endothelial dysfunction, and that may cause more spikes in them. Blood pressure. Yeah. And treatment now. Now, this is two questions from Dr. Aditya. So let's take one first. Welcome to Ganesh Ambore Saab and also Dr. Vipin. Um, so, Dr. Atul, the first question is, how do we manage blood pressure during winter? If I give a diuretic, there are separate challenges associated with that. If we give a beta blocker, there are other challenges. And if we give a calcium channel blocker, others. So, take any patient who came to your OPD today. Based upon the pre-existing therapy, how do you change treatment over the next 1.5 months? So, my OPD, uh, we usually tend to use more of diuretics during summers, uh, and usually, like I told you, there is increased water sodium retention, and we also use more of ACE and ARBs during winter season, because we understand that the renin angiotensin axis is activated in these patients. We do tell them to reduce their salt intake, and our next line treatment is usually then it what we use usually is beta blockers. This is what we do in our OPDs. Thanks. And I think we also follow the same. I'm sure Dr. Utsav would be following the same policy, the same practice in Delhi. One challenge that I do face is getting people to reduce salt. So, this also I realized in the early years of my practice. When a patient would come to me and I would say, please reduce sugars, whether the patient listens to me or not, that is a separate matter. But this is something that is concordant with the patient's belief systems. The patient believes that high sugar and diabetes are linked to each other. So there would be no argument or fighting in the OPD. If I would say, and even now, when I say, please stop fat, do not eat parathas, do not eat butter or cream, because that is rich in calories. Uh, there is a slight amount of explanation that is required because the patient believes that sugar causes sugar. He doesn't believe that fat has got calories. He doesn't know. Yeah, The big, absolutely. yeah. The biggest challenge, however, Dr. Atul, that I faced was when I would say reduce salt. So BP is high, accelerated hypertension, and we know that there is a high salt intake during winter. So we'd say, why don't you stop salt or reduce salt? आप नमक का व्रत रखें, नमक का रोजा रखें एक दो दिन, देखो क्या होता है. Especially people with salt sensitivity and people with mild edema, which you know is because of high salt intake or because of low protein intake. तो फिर तो लड़ाई झगड़ा होता था. People would begin hating me. शुरू में मुझे समझ नहीं आती थी why this is going on. Then I realized I was giving a problem statement to the patient or to his wife. I was telling them stop using salt for your cooking. But I was not giving a full solution statement. A lady who has been cooking with salt and sugar and fat throughout, saturated fats throughout her life, I've taken all these three things from her. Now she doesn't know how to cook anymore. In a traditional Indian family, the only way she has to her husband's heart is through her husband's stomach.
and I'm stealing that away from her. So her position in the family is threatened. So all these are the things, which would make them, and again, people from certain socioeconomic backgrounds, where the women are more dependent, they would get upset. So then I realized that I need to give a full solution statement. तो अब हमारी टॉक होती है कि आप नमक कम कर दें, हो सके तो नमक का रोजा व्रत रख के देखें 1-2 दिन के लिए, आपको असर दिख जाएगा, आपका वजन 2 किलो घट जाएगा. दिस इज फॉर समवन विद फ्लूइड ओवरलोड. हफ्ते में 2 किलो वजन घट जाएगा, आप करके तो देखें एक बार. एंड Yeah, नमक के बदले क्या यूज करेंगे? हींग, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, हरी मिर्च, जीरा. So the Indian kitchen is blessed with so many spices. So that's what we do now in the OPD. And yeah, to everyone, especially Dr. Vipin is from Himachal, जहाँ पे और ठंड होती है. So how do you sort of handle these things when you want to get a person to reduce salt? Uh, Dr. Atul, one question for you, and Dr. Aditya, I know that Dr. Atul is an expert in this. Uh, so, like Dr. Atul, we said Dr. Aditya is from Chennai. His question is, how do I treat supine hypertension? And if you could extend the discussion to cardiac autonomic neuropathy, because this is something very important and it also hurts our patients in winter. yeah. Autonomic neuropathy, as such, is usually there is a mismatch between sympathetic and parasympathetic flow, with a sympathetic system being more active. So uh, exercises, especially aerobics and running, especially helps in this situation. Uh, there are different ways. If the postural dizziness is very high, then you can try midodrine or uh, fluorocortisone in certain situations. Uh, but again, the response rate is very variable, especially with the situations like postural orthostatic tachycardia syndrome. You may use beta blockers in some situations, but the most helpful thing is actually exercise. So maintaining a good exercise routine helps, because that helps in improving the parasympathetic flow, which is usually the more disturbed part of the chain. uh, so this is what we also try. We tend to use more of beta blockers in this situation, but giving a good exercise regimen and telling them to jog or run helps them a lot. It's actually very tough, Aditya. So the best would be a balanced lifestyle and tell your patients not to practice 100-meter running or to run fast for short period of time. Tell them to Long. exercise slowly, yeah, for a long period of time. Like think that they are marathon runners. Hmm. Yeah. High salt intake helps. So depending upon which part of the country you are in, it can be kokum juice, it can be nimbu pani, it can be chaj or buttermilk. You can try these drinks in moderation. Dr. Atul, your comments on the use of indapamide, if we are facing a lot of issues with, let us say, isolated systolic hypertension, Yeah. indapamide, calcium channel blockers, what would be the safest? Yeah, it is one of the drug of choices for systolic hypertension. We especially during winters, we do tend to see a lot of patients who have very high systolic blood pressures, and indapamide is one of the diuretics of choice. Very less chances of hyponatremia, unlike thiazides and thiazide-like diuretics, which have a higher chances of developing hyponatremia. So we have been using indapamide quite frequently in our OPDs for systolic hypertension, and uh, uh, especially systolic hypertension. It helps a lot. Thanks. Dr. Vipin points out that if you want a low sodium diet, winter vegetables are all low in sodium. That's right. Rice and buffalo milk are also low. Maize is also not very high in sodium, so all cereals one can take.
इट्स द एडेड सोडियम व्हिच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जब हम नमक ऊपर से डालते हैं, टेबल सॉल्ट, जो फूड में जो सोडियम है दैट इज फाउंड इन द एनिमल किंगडम। इफ यू आर ईटिंग मटन और यू आर ईटिंग चिकन, तो मसल में सोडियम होता है, जो भी आप मीट खाएंगे। वेजिटेरियन फूड में बहुत कम सोडियम होता है। वन एक्सेप्शन वुड बी स्पिनच, जो साग या या बथुआ या पालक, इनमें रिलेटिवली ज्यादा सोडियम है। वो भी यू कैन टेस्ट हाउ इट इज। जस्ट ट्राई टू मेक बथुआ और साग और पालक, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनच, विदाउट सॉल्ट। जस्ट सी हाउ द टेस्ट इज। And actually, honestly, I think most of us will find that we really don't need to add salt. You can get very tasty spinach even without adding any salt. So table salt में सबसे ज्यादा दिक्कत है, followed by food from the animal kingdom, and within the vegetarian kingdom it would be spinach which would have the highest sodium. डॉक्टर अतुल, एक नमस्कार आ रहा है आपको सुषमा जुनेजा जी से एंड दिनेश ठाकुर साहब से। करना मैडम कहती हैं, थैंक यू सर एंड वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। Could you educate us how much water should we consume during winter? And what kind of a biological test can we do ourselves to find out whether we are drinking enough water or not? चाहे winter हो चाहे summer हो। So, uh, usually in winters, all of us actually don't feel. Okay, I think we lost Dr. Atul again. And in winter, we don't feel thirsty, but still we should drink water. This is especially true for very young people and for very old people. जो हमारे थर्स्ट के रेगुलेटरी सेंटर हैं हाइपोथैलेमस थैलेमस में, वो यंग बच्चों में डेवलप नहीं होते और बड़ों में कमजोर हो जाते हैं। The thirst regulation in the hypothalamus is not very well developed in very young children, and it gets weakened in old people. So we must make an effort to drink water. The easiest way of finding out how much to drink is to check the urine color. If your urine color has become dark or high colored, yeah, Dr. Tul, welcome back. Jai Hind. Yeah, then, Urine output and fluid intake and how to manage. yeah. So actually, मैं वही बता रहा था। So एक बार मैं दिल्ली में था किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की बिल्डिंग में। सो आई रिमेम्बर गोइंग टू द वॉशरूम। मैं वॉशरूम में गया और एक्चुअल में उन्होंने एक कलर्ड बार लगाया हुआ था टॉयलेट की सीट के साथ में, जिसमें एक्चुअली आप अपने यूरिन का कलर उस कलर के साथ मैच कर सकते थे। उन्होंने इंडिकेटर्स दिए हुए थे, अगर आपका कलर ये है तो आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपको थोड़ा सा वाटर, अपना वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। सो जो आप कह रहे थे कि यूरिन का कलर, एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द वेरी simple things to do. If you are passing dark yellow or high colored urine, probably you are drinking less water. एंड उससे भी सीवियर अगर आप जैसे लेट के खड़े हो रहे हैं और आपको हल्का सा डिजी लग रहा है, वो अगेन वॉल्यूम, लो वॉल्यूम स्टेटस की एक निशानी होती है। प्रॉब्ली वाटर इनटेक उसमें भी हेल्प करता है। And it is actually difficult to remember drinking water in winter, especially in parts where we stay. तो एक्चुअली मैं तो रोज सुबह एक अपनी 1 लीटर की एक बॉटल लेके जाता हूँ, जो मेरा मतलब मैं उसको, चाहे मेरे को प्यास हो या ना हो, मैं उसको ओपीडी में खत्म करके ही आता हूँ। दिस इज हाउ आई ट्राई। मे बी आप हमें कुछ और टिप्स दे सके। नहीं, दैट्स द बेस्ट वे, आई थिंक दैट्स द राइट वे। उतना पीना चाहिए एंड यू जस्ट लुक एट द कलर ऑफ योर यूरिन। जैसे ही आपको दिखे कि डार्क हो रहा है, तो इट मींस हमने पानी कम पिया है। कभी कभी विंटर में दिक्कत भी आती है, बिकॉज लेट्स से यू ड्रिंक अ हाई सॉल्टेड बेवरेज, पानी ज्यादा पी लिया, दूध ज्यादा पी लिया, तो बाथरूम ज्यादा जाना पड़ता है। यू वांट टू अवॉइड दैट। Many other people, for social reasons, women who live in villages, they understand quite early on in life कि जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही बाथरूम जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा, when toilets were not available, so they reduce their fluid intake. But उसके साथ क्या होता है, urinary tract infection, cystitis, ये चीजें बढ़ती हैं। प्रेगनेंसी में भी ऐसे होता है। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर द बेबी बिगिंस टू प्रेस अपॉन द ब्लैडर, तो बाथरूम बार बार जाना पड़ता है। सो द लेडी थिंक्स दैट इट्स बिकॉज आई एम ड्रिंकिंग टू मच वाटर, तो वो पानी कम कर देती हैं। दैट इज रॉन्ग। बेबी ने तो किक मारनी है, उसने फुटबॉल खेलना ही खेलना है। सो दैट्स अ हैप्पी पार्ट, इट मींस द बेबी इज एक्टिव,
So whenever you go to the bathroom, as someone who is approaching delivery, feel happy that the baby is active. Speaking of women health, sir, women's health, sir, a question from Manjula Rani Sahaji. Dr. Manjula Rani says, okay, मेरा बेटा क्रिएटिन ले रहा है. What should his water intake be? So again, creatinine is a protein. So probably he's going to gym, and for that he has been taking creatine, which is a high biological value amino acid containing protein. So आप कभी भी जब भी हाई प्रोटीन इनटेक ले रहे हो तो वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए. एंड अगेन जैसे सर कह रहे थे कि हर एक किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. एंड what we usually tell to our patients is 1.5 to 2 liters of water per day. And looking at the color of the urine, if it is high colored, definitely, especially if you are on supplements, you should not let your urine be high colored, because uh, uh, acute renal problems होने के chances बढ़ जाते हैं इस situation. एक और क्वेश्चन रहेगा which junior Saha साहब may not like the answer to, but is there a need to take creatine, and what does protein do to our kidneys? सो एक्चुअल में हमें आर्टिफिशियल प्रोटीन के बहुत ज़्यादा सोर्सेज की जरूरत नहीं होती. नॉर्मल आदमी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 to 1.1 ग्राम पर केजी पर डे होता है. सो यदि एक 60 किलोग्राम का एक आदमी है तो यूजली 40 to 60 ग्राम्स अगर वो प्रोटीन्स ले रहे हैं, दैट इज गुड इनफ फॉर मसल्स ऑफ द बॉडी. प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी किडनीज के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जाके उनके अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं. और यदि हम हाई प्रोटीन इनटेक पे हैं तो हमारे जो किडनीज हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है. क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस सिचुएशन में. सो नो बहुत ज़्यादा स्पेशली जो ये हम एक्सरसाइजेस के वक्त एक्सेस प्रोटीन्स लेते हैं, नॉट वेरी एडवाइजेबल. And again, the sources have to be looked into, because many of these proteins contain a lot of other things that are actually not required, and these may be harmful for the body. हमें ना जनरल में हमें हैबिट है ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ को देखने की. सारे कार्बोहाइड्रेट्स खराब हैं, सारे प्रोटीन्स अच्छे हैं, बट ज़्यादातर लाइफ इज़ नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. एक मिडल वाला पाथ होता है जो भगवान बुद्ध ने भी हमें सिखाया. So when you look at medical literature, you will find that there is protein associated or protein induced nephropathy. There is protein induced enterocolitis, protein induced colitis. तो इसका मतलब प्रोटीन से बीमारियां होती हैं. अगर हम नॉर्मल खाना पीना खाएं तो सब ठीक रहेगा. ये वाकई सच है कि इंडियन डाइट में, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कम होता है, सो वी शुड ट्राई टू इंक्रीज दैट. बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड ईट आर्टिफिशियल प्रोटीन्स. तो लिमिट में ले लें वो भी कोई हर्ज नहीं, बट डोंट मेक इट द सेंट्रल पिलर और द फाउंडेशन ऑफ योर डाइट. मतलब उसको मे बी अचार की तरह या एड ऑन की तरह ले लें, बट डोंट मेक द क्रिएटिनिन बॉक्स द सेंटर ऑफ योर लाइफ, एंड आसपास आप बाकी कुछ ले रहे हैं. डोंट डू इट दैट वे बेटर. डॉक्टर गोयल साहब पूछते हैं, वी आर स्पीकिंग ऑफ हाइमल हार्मोन्स एंड सॉल्ट. So you said rightfully so that salt intake goes up in winter, and that also induces high BP. So is there any difference in the various salts, table salt, rock salt, black salt? So again, it is the amount of sodium that is different between table salt and rock salt. So rock salt contains different amount of potassium chloride and sodium chloride, whereas our table salt is predominantly sodium chloride. तो ऐसा नहीं है कि रॉक सॉल्ट में जीरो है, टेबल सॉल्ट से कम है, लेकिन जीरो नहीं है वो. अगेन बिकॉज इट इज नॉट अ प्योर फॉर्म, तो कितना परसेंटेज किसका है वो अगेन इट इज डिफिकल्ट टू आंसर, स्पेशली विद रॉक सॉल्ट. बट इन टेबल सॉल्ट इट इज प्रीडोमिनेंटली सोडियम क्लोराइड, दैट इज देयर. रेखा जी भी पूछती हैं सेंधा नमक, सो इज इट गुड फॉर हेल्थ और नो? अगेन ब्लैक एंड व्हाइट मिडिल पाथ. डॉक्टर अतुल, योर कमेंट्स. सेंधा नमक अच्छा है या खराब है?
थायराइड को So क्या करेगा, सेहत को क्या अगेन करेगा? अगेन या डेफिनेटली सो जब हमारी कंट्री ने यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन स्टार्ट किया था, तो उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि उससे बहुत जो जो मुश्किल बीमारियां थी वो कम हो रही थी। हमारे जो जो जनरेशन्स में जो क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम थी, लो आईक्यू की प्रॉब्लम थी, वो कम हो रही थी। तो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि अगर आपने इंडिया में पैकेटेड सॉल्ट भेजना है तो इट हैज टू बी आयोडाइज्ड। सो डेफिनेटली माय आंसर विल ऑलवेज बी कि आपको हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए, बिकॉज हम बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बीमारियों को इससे पीछे कर पा रहे हैं, एक सिंपल सी प्रॉब्लम ना आने दे रही कि उस पे रिस्क पे। जो पिछली जनरेशन है, उनको पता होगा कि ग्वाइटर, नेक की स्वेलिंग बहुत कॉमन हुआ करती थी। और इन जनरल पिछली जनरेशन ये मानेगी कि आज के जो बच्चे हैं इंडिया के, उनका आईक्यू बेटर है पहले से। नाउ अगेन मेनी सोशल रीजंस फॉर इंक्रीज्ड आईक्यू, बट वन ऑफ देम इज एडिक्वेट आयोडीन। मदर को आयोडीन पूरा मिलता है प्रेगनेंसी में। जब आप गायनी की रिकमेंडेशंस देखते हैं, चाहे हमारी हो, चाहे अमेरिका की या यूके की हो, यूरोप की, वो सब बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी में मल्टीविटामिन दें, आयोडीन कंटेनिंग मल्टीविटामिन पिल। वो लिखते हैं कि आयोडीन की कमी ना हो प्रेगनेंसी में। उसकी वजह से बेबी ठीक बढ़ता है। और जब हम आयोडाइज्ड नमक खाते हैं, आयोडाइज्ड नमक जब हम लेते हैं, तो उससे ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होती है। सेंधा नमक एडवाइस करना कभी कभार ले लें, कोई हर्ज नहीं। बट जो रॉक सॉल्ट है, दैट इज एक्चुअली ईटन बाय काउज एंड बफलोज इन हरियाणा। हमारे जो खेती वाले कलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो रॉक सॉल्ट ऐसे रॉक्स ले जाके अपने पशुओं के आगे रखते हैं। सो रॉक सॉल्ट इज फॉर एनिमल्स, for cows and buffaloes, and we should be taking iodized salt, but again within limit. तो वो साहब पूछते हैं, whatever salt it is, how much and when are there recommendations from WHO, and what are we doing when we eat our pizzas and ketchups? So the recommendations are usually 5 grams of salt that is equivalent to 1 teaspoon of salt per day. Okay. बिलीव मी, हमारा इंटेक इससे कम से कम 3 या 4 टाइम्स है। आप चाहे कितना भी कम कर रहे हैं, आप इतना ले रहे हैं। So this is what is being done in our households, and if we are taking achar, papad, sauces, then it is way too high. So actually our intake, like Dr. Atul says, is something like 3 to 4 times the upper limit of normal. That is 5 grams, just 1 teaspoon. And just see, assuming that no food is coming from outside, assuming that you didn't go and attend even a single party, go to a restaurant, then just see 5 grams per person per day. That is how much is it? 5 multiplied by 30. 1.150 grams. शुक्र है, 150. मुझे लग रहा था मेरे से गड़बड़ हो जाएगी। सो 150 grams and 150 milligram, yeah, per month. And let's say it's 4 people at home, so that's 600. And this is assuming that nothing is coming from outside, including the bread that you buy from outside. Bread में भी नमक है. नमक Any है। biscuit that you're eating, उसमें भी नमक है. So कर करा के just see how much we are eating. Let's share some dangerous K's and dangerous P's, because these are also important for hymal health, क्योंकि नमक बहुत बढ़ता है। तो पापड़, पकौड़ा, पिकल, पिज्जा, All peas. all peas, all with lots of sodium. Sorry. करेले की सब्जी, the way it is made, अगर टेस्टी हो। कटहल, अगर स्वाद बनाया जाए। करेला, कटहल, कड़ी, and ketchup. Ketchup. All these also. And like Vovo says, it's very difficult to calculate the input of salt, but actually it's too much. So try to reduce wherever possible. Like make a beginning when you are cooking spinach. Don't add salt to it. See what happens. एक आपको oregano में भी दिखाई देगा. If you are buying fresh oregano or oregano leaves, that is a plant or a leaf product, zero salt. But the moment you buy oregano seasoning, जो आपके पिज्जा को accompany करती है, that is a bombshell. It's a salt bombshell. It's a lot of salt.
एंड वो साहब पूछते हैं, डॉक्टर अतुल, इफ यू आर एबल टू आंसर, बट और कम करेंगे, हार्ट फेलियर पेशेंट्स विद लो ejection fraction, specific dietary instructions for them, water, salt. So again, it is believed कि अगर हार्ट फेलियर है तो सॉल्ट शुड बी लेस देन 2 ग्राम. सो इनका टारगेट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है. और जो वाटर इनटेक है, इट इज यूजली सेट दैट अराउंड whatever the output is, if you add 500 milliliters to that, that should be your intake during winter season, and roughly around 1 liter during summers, if it is a hot summer like what we see here in North India. This is what the recommendations are usually. Thanks. Uh, One last question from Dr. Saxena. It's already 8 p.m. We'll break this into two parts, Dr. Saxena, if you allow us, and we'll request Dr. Atul to take the first part. So, Dr. Atul, the question actually relates to preeclampsia and eclampsia. And Dr. Saab is a gynecologist, and he's speaking about vitamin D and calcium doses. But before that, oral versus injectable vitamin D. What was the what was standard practice 20 years ago? What has happened to our oral pharmaceutical formulations in the past 20 years? And now what is our standard practice? Oral versus injectable vitamin D. So, first of all, whenever we are using any medication via an injectable route, is agar A, the absorption is not good, or B, we want a rapid result, then that's the reason why we are giving any formulation via an injectable route. But here we have enough evidence now that if you are giving a patient oral vitamin D, then the levels will increase more rapidly in this person who is being given oral vitamin D versus a person who has been given a bolus of injectable vitamin D. So it is not increasing the levels as rapidly as oral. So actually, it is not useful at all. Secondly, the drug is easily absorbable. We discussed that there are different formulations that are now available. Even you can have formulations. We have nano formulation which are very easily absorbable. So again, absorption is no problem over here. Then the third is the risk of toxicity. The risk of toxicity is higher with injectable formulation versus an oral formulation. So we are not having any added benefit, but we are at loss by giving injectable. You are increasing the risk of local complications like abscess formation. You are giving a painful injection to a person for a drug that can be easily be given orally, and we have good formulations that are now available. So actually, only situation probably where injectable vitamin D is required is where absorption is a problem. Probably has been some gut surgery that has been done where absorption is compromised. Probably that's the only indication of giving an injectable vitamin D. Thank you so much, Dr. Atul, because this makes the answer to the second part of the question very easy for me. So, uh, now, why vitamin D deficiency is associated with preeclampsia? That is because vitamin D stabilizes the endothelium, and PIH, pregnancy-induced hypertension, that is the correct word, that occurs because of endothelial dysfunction. Even IUGR, intrauterine growth retardation, occurs because of endothelial dysfunction. The placenta is not able to transfer adequate nutrients to the fetus. Uh, so therefore, vitamin D sufficiency must be maintained in pregnancy and outside of it. If you suspect vitamin D deficiency, even if you are not able to do the test, 60,000 units once a week should suffice for 8 weeks in second and third trimester. If you were to give vitamin D in first trimester, then certainly we must have a documented low vitamin D, and only then should we prescribe in first trimester. A weekly dose will be fine. You don't have to give a daily dose of 2,000 or 4,000 units. Now, coming back to the endothelial dysfunction, that is more closely linked with magnesium deficiency. So, you may wish to do a serum magnesium, or you may wish to treat prophylactically.
Speaking of magnesium, and I'm sure Dr. Saxena and Dr. Atul both will enjoy this nugget from history. There is something known as a ढाका regimen. तो हुआ क्या कि एक दिन सीनियर रेजिडेंट साहब ड्यूटी पे थे गायनी के ढाका में एक मेडिकल कॉलेज में बांग्लादेश में, एंड सडनली एक्लैम्सिया की बाढ़ आ गई. आई मीन अ फ्लड ऑफ एक्लैम्सिया पेशेंट्स केम. द ट्रीटमेंट इज मैगसल्फ, मैग्नीशियम सल्फेट. The doctor didn't know what to do. So what he did, he began giving half dose to all the people who had come to the emergency. And the next day found in labor room that the results were better. Half dose was doing a better job than full dose. So that is the Dhaka regimen, and that also explains, this is called serendipity. तुक्का लग गया. अब क्विज क्वेश्चन, कोई आजकल क्विज क्वेश्चन के जवाब भी नहीं देते. तो तुक्का लग गया कौन सी मूवी का गाना है. मेरा तुक्का लग गया, आपका भी लग गया तुक्का. So that's a song actually. It comes from Jagga Jasoos. So, that is what Dr. Atul and I do when sometimes we are able to answer our children. Which is बात पूछते हैं, हम जवाब देते हैं, so that we think Jagga Jasoos. Okay. So that was serendipity or tukka lag gaya, and that also explains why our, sometimes our doses or our method of administration changes over time, because you get newer research which tells you that you can do better with a particular dose. So that would be for PIH eclampsia. Vitamin D in second and third trimester, 60,000 a week for 8 weeks, then once in 15 days. And magnesium should be something that we should look at more carefully. सर, इट्स बीन ग्रेट बीइंग विद यू. इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए. हमारा टॉपिक था हाइमल हार्मोन्स. एक बार याद तो करा दो हमें, व्हाट हाइमल इज, व्हाट हाइमल हार्मोन्स आर, एंड व्हाट आर टेक होम मैसेजेस. नाउ विंटर इज जस्ट बिगिनिंग. Yeah, so hymal actually is the word that has been used for winter. So hymal hormones means we are looking at the hormonal changes during winter. So uh, there are certain changes like there is an increase in melatonin levels. There is a reduction in serotonin. There are certain hormones like corticosteroids and thyroid hormones that are increased, and it is also suggested that hormones like testosterone and estrogens are also increased during fall and winter seasons. So these are the hormones that are increased, and actually, if you look, they help us in anabolism, as well as they helps us in improving our temperature, in maintaining our temperatures during winter seasons. So these are the changes that occur, and one hormone that we need to especially take care during winters is vitamin D, uh, because we tend to wear more amount of clothings during winters. So probably taking oral vitamin D supplementation helps during winter seasons. थैंक यू सो मच सर. इट्स बीन ग्रेट बीइंग विद यू. पर ये तो हम आपको पूछना ही भूल गए, श्री गंगानगर में धुंध कितनी है और ठंड कितनी है? So yesterday's visibility, I remember मैं अपनी ओपीडी के बाद हॉस्पिटल राउंड लेने गया था, तो विजिबिलिटी वाज लेस देन आई बिलीव 10 मीटर. मतलब बहुत ज्यादा धूप थी कल रात को तो. और मॉर्निंग यूजुअली आवर ओपीडीज नाउ स्टार्ट लेट, around 11:30. Patients start coming in, the appointments are usually delayed. The most common reason that I have been given is कि धुंध फॉग. फॉग बहुत ज्यादा थी, इस वजह से हम लेट हो गए. So अब लेट होना, मतलब my OPDs usually are ending at around 4:30 because they are starting at 11:30. Okay. So then thank you sir. It must have been a busy day for you. उसके बावजूद आपने हमें समय दिया, जो कि वाकई डॉक्टर अतुल ढिंगरा का बहुत कीमती समय होता है. और Sir, बहुत pleasure बहुत has truly been mine. मैंने आज बहुत सीखा है, बहुत मजा आया इस टॉक में, and really it has been a pleasure to be on this talk. दैट इज म्यूचुअल डॉक्टर अतुल. थैंक यू, एंड सबकी तरफ से के मेट टॉक पे थैंक यू. हमारे साथ फराज हैं बैक स्टेज, तो फराज को भी लेते हैं ऑन स्टेज. फराज, एनीथिंग न्यू दैट यू लर्नड, व्हाट इज योर टेक होम फॉर योरसेल्फ एंड फॉर एवरीवन? हमारा आज का टॉपिक है विंटर हॉर्मोन्स. Yes, sir. The topic was very interesting, and the thing is that to be aware of winter, don't take it like in go. You have to be careful so that we have a healthy and environment. We will not fall ill on this season. That's it. या
अपना ख्याल रखें. We will continue next month with a series of KK Med Talks on winter illnesses, which will be probably be hosted by Dr. Vinny Kantru. And Madam is a lung chest specialist at Apollo Hospital, New Delhi. So most probably second week of January से winter illnesses के बारे में हम बात करेंगे. जैसे फराज ने कहा, अपना ख्याल रखें, बिवेयर चुकन्ने रहें, बी विजिलेंट, खासकर ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज थायराइड और एड्रिनल पिट्यूटरी ये तो जो मरीज हैं वो दिखाते ही हैं. बीपी के लिए सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए. नमक जरूर कम करें. थैंक्स टू वो फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. We also have a certificate of appreciation for Dr. Atul. If Faraz, you could show that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, आपका सर. Thank you. धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. थारा भला हो डॉक्टर. And Thank you. Jai Hind, everyone. It's been great being with you today. Jai Hind. Jai Hind.